book Flamingo. Book Flamingo, The Rat Trap. Lesson number 4, The Rat Trap. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wires. Rat trap means a trap for the mice. He made them himself at odd moments. He made them himself when he got time, from the material he got by begging. The material he got for that by begging in the stores or at the big farms. Sometimes he begged things from a big farm. But even so, the business was not especially profitable. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. To lead his life, he did this work and a little bit thievery, the work of thief. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. Dress was not good. Weakness we can see on the face, and we can see his hunger face also. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. No one can imagine how sad and monotonous. Monotonous means dull. Life can appear to such a vagabond. Vagabond means tramp. Tramp. In Hindi we say avara. Who plods and walks along the road, left to his own meditation. अपने आइडिया से सोचते रहते चलते रहता है. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. लेकिन एक दिन उसके साथ क्या हुआ देखो. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. The idea got into his mind, and he concluded all the world is a trap. The things which are in the world is also in a trap. That the land, the sea, whatever it may be, he believes that everything is in a trap. It had never existed for any other purpose than to see baits for people. जो धरती में दिखाई देते हैं वो एक चारा का काम करता है दूसरा जानवर को पकड़ने का. दैट मीन्स जिंदा चारा का काम करता है दूसरा जानवर को फंसाने के लिए. चूहा वगैरह को पकड़ने के लिए जो हम लगाते हैं ना, तो उसका अंदर कोई चारा रखता है. चूहा को पकड़ने के लिए रोटी या कुछ ऐसे आइटम रखता है. वो इस तरह का जिंदा चारा, जैसे बड़ा जानवर को पकड़ने के लिए ये चीते को पकड़ना है तो उसके सामने छोटा जानवर को बांध के रखते हैं, जिंदा जानवर को, ताकि वो आवाज़ करे, हिले डुले. वो उसका ऊपर कूद पड़ता है और उसको पकड़ लेते. समुद्र से मछली पकड़ना है तो उसी का अंदर
जो मछली को पकड़ने के लिए जो कांटा डालते या जाल बिछाते, और उसमें भी जाल में तो कुछ नहीं है लेकिन कांटा जो है तो उसी का अंदर दूसरा बारीक बारीक जानवर को फंसा के डाल देते। इट ऑफर्ड riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. इस तरह से जो चारा लगाता है, अगर किसी ने will touch it, everything is finished and he or she will come into that trap. That he was thinking like this one day. The world had of course never been very kind to him. The world was not kind to him, and so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. दुनिया उसका परवाह नहीं किया, इसलिए उसने भी उस किसी का परवाह नहीं किया, उसको थोड़ा लूटने लगा. It became a cherished pastime of his. चलते चलते बड़ा पास टाइम हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, वो चेरिश्ड होने लगा, गहराई में पहुंचने लगा. ड्यूरिंग मेनी ड्रायरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेफ्ट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर. स्नेयर भी यही मीनिंग है, फंदा. एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट. कुछ लोग उस ट्रैप को देखता है, उसका अंदर फंसा हुआ चारा को भी देखता है, उसको पकड़ने के लिए चक्कर काटते रहते, कब मौका मिलेगा, आई विल गो इनसाइड, आई विल एंटर एंड विल टेक दैट. ये सोच के बहुत सारे लोग बाकी अभी भी चक्कर काटते रहते हैं. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. इस तरह से सोचते सोचते अपना धंधा कर रहे थे, और एक दिन ऐसे चलते चलते जा रहे थे, सड़क के किनारे एक छोटा सा कॉटेज दिखाई दिया, घर दिखाई दिया. एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट. रात हो गए थे तो इसलिए उसने वहां जाके रात बिताने का रिक्वेस्ट करने गए थे. आजकल कहते हैं कि कोई ऐसा आ जाए तो रात को कोई अनजान आदमी को हम जगह देते ही नहीं है. Nor was he refused. Instead of the sour faces with the ordinarily met him, the owner, who was an old man without a wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. And in that house a single man was living, an old man was living. He was not a married man, because here says he had no wife or no children, that we can see that he was an unmarried man. He was single, he was alone. सामने वाला सूखड़ा होते हुए भी उसने क्या किया, उसका ऑफर स्वीकार कर लिया, आ जाओ. वो ये सोचकर कम से कम कोई मिल जाए तो थोड़ी देर बातें करके बैठे, ये सोचकर उसने उसको हाँ कर लिया. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. उसने उसको दलिया तैयार करके खिलाया. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. फिर वो टोबाको तोड़ के दिया उसके पास जो था. स्लाइस यानी टुकड़ा, कार्व्ड ऑफ यानी कट,
उसने जर्दा काट के उसको दे दिया, पाइप में डालने वाला जो जर्दा, या तो है मुंह में डालते जो नीचे वाला ओट को खींच के उसका अंदर भर के फिर पता नहीं चूसते रहते, चबाते रहते। सूख ले लो, आप लोग कोई खाते हैं तो बस नहीं खाना। और फर्स्ट थिंग, इट इज ए बैड हैबिट, and second, it is dangerous, so don't use. If you get free, even if, I advise you not to touch it. और इस तरह से उसके लिए खाना तैयार किया और उसके बाद उसको पाइप पीने दिया। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैकेट ऑफ कार्ड एंड प्लेड जोलिस। फिर उसने सोचा थोड़ी देर अभी टाइम है तो ताश खेल देते विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। सोने का टाइम तक वो खेलता रहा। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट The old man was just as generous with his confidence as with this porridge and tobacco. Old man tobacco porridge provide करके आदमी का दिल जीत लिया। And the guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter. उसने बोला मेरा अच्छा टाइम में मैं क्रॉफ्टर का काम कर रहा था। वन हु वर्क्स इन ए स्मॉल फार्म, मैं एक छोटा सा फार्म में काम करता था। उस फार्म का नाम है राम्स जो आयरन वर्क्स, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और जमीन में भी काम किया। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब उसका एज ज़्यादा हो गया और इसलिए इस तरह का काम नहीं कर सकता था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, लेकिन वो एक गाय पालता था, उसी से जो कमाई होती है तो उससे अपना गुजारा चलता था। यस, द बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बोस का फीमेल मानता है बोसी, लेकिन यहाँ तो ये काउ के लिए बोला। ये काउ बिल्कुल अजीब सी काउ थी। एंड शी कुड गिव मिल्क फॉर ए क्रीमरी एवरी डे। दूध तो क्रीमरी में देते, डेयरी में देते। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। पिछले महीने उसने 30 kroner कमाया उस गाय से। 30 kroner, kroner मीन्स उधर का रुपी। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on the nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills and a note. उसने सोचा इस आदमी को विश्वास नहीं हो रही, मैंने 30 kroner कमाया। इसलिए वो सीधे गया, खिड़की के पास दीवार में एक कील में पर्स टांग रखा था, उसको निकाल के खोला। और उसके बाद उसको दिखा दिया, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। This he held up before the eyes of his guest,
वो निकाल के उसके आंखों के सामने यूं दिखाया, भैया तो देख, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट टेलिंग ए लाई, नॉडिंग नोइंगली, एंड देन स्टफ्ड दम बैक इनटू द पाउच। जैसे निकाल के दिखाया वैसे वापस भी रख दिया। The next day, both men got up in good season. Good season means early morning. दोनों सुबह उठा। The crofter was in a hurry to milk his cow. Crofter इसलिए जल्दी था उसको सुबह दूध निकालना। And the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had got up. रैट ट्रैप ने सोचा मालिक निकल के चले जा रहे तो बस वो मैं कैसे पड़े रहूं यहाँ, इसलिए मजबूरी में वो भी खड़े हो गए। एंड दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। दोनों साथ साथ निकले वहां से। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। दरवाजा बंद करके लॉफ्टर ने पॉकेट में चाबी रखा। एंड द मैन विद द रैट ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू। आदमी उसको गुड बाय भी कहा, थैंक यू भी कहा। एंड thereupon even went his own way। वो भी अपने रास्ते पे चला गया। But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door। लेकिन आधा घंटे के बाद वो वापस आ गया, वहीं खड़े रहा उस घर के सामने। He did not try to get in, however। घर तोड़ के अंदर जाने के लिए कोई, पहले बोला था ना वो छोटा मोटा चोरी भी करता है, लेकिन घर तोड़ा ही नहीं। He only went up to the window। वो सीधे खिड़की के पास गया। Smashed a pane, कांच तोड़ा। Stuck his hand in, अपना हाथ अंदर डाला। And got hold of the pouch, पाउच में पकड़ा। With the 30 kroner, he took the money and thrust it into his pocket। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away। उसने उसमें से पैसा निकाला, अपना पॉकेट में डाल दी और उसके बाद पाउच वैसे अपने जगह में रख के वहां से चला गया। यही होता है, देखो इंसान को रात को शरण दे दिया, खाना खिलाया, हुक्कप दिया, सारे मदद करने के बाद भी उसका विचार, चोर हमेशा चोर होता है, चाहे कैसा भी हो, कहीं भी रखो, इस तरह के जो स्थिति आ जाते तो ऐसा ही होता। देख लिया, यही है जिंदगी। हाँ, the rest we will see in the next class। Okay।